Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid and I am a second year medical student, and welcome to our third video on support and movement, a very easy chapter. Please make sure you watch the previous videos. And okay, so first I want to sort of talk about a few memorization things. ठीक है, like we'll try कि हम इनको थोड़ा सा conceptually कर लें, किसी चीज़ के साथ हम associate कर लें ताकि हमारे लिए याद करना ये काफ़ी आसान हो जाए. ठीक है, अच्छा, first of all, and all of this is very high yield and especially in your MDCAT इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी memorization की आ जाती हैं, तो it's really good. ये चीज़ें आपको अभी से याद होना शुरू हो जाएंगी. Alright, so the epimysium is essentially this external connective tissue, tissue of every muscle in your body. Alright, of every muscle. There are a few exceptions, but you do not need to know them till you are in your medical school. Alright, fascicle क्या होता है? Fascicles are basically that muscles are divided into these discrete bundles of muscle cells. Okay, just a second, we'll look at it. I've added a diagram as well. Alright, okay, a perimysium क्या होता है? Perimysium is a connective tissue layer. Alright, connective tissue as CT in the future now. Connective tissue layer of every fascicle. Alright, okay, so now what is endomysium? Alright, endomysium is connective tissue of every muscle fiber in, just a second, every muscle fiber in your one second, my brain is just blanking out, in your fascicle. Alright, sorry, I just had a very long day. Alright guys, sarcoplasm is just a very simple thing, but there's just one small thing that I want to tell you guys. It's basically the cytoplasm of your muscle cells, alright, of muscle. Okay, but the difference essentially is, the reason why this is important, they can ask you this in questions, is that it has an increased amount of, I would want you guys to guess it, but it has an increased amount of myoglobin and glycogen. Alright, myoglobin and glycogen. Alright, okay, and this is obviously because of the metabolic requirements of the of the muscle cell. Alright guys, let's come over here. Okay, let's just leave this tendon क्या होता है, fascicle क्या होता है, we've already talked a bit about it. I don't want to bring it over here. Alright, okay guys, so over here you see the epimysium. So this is a muscle. Alright, this entire thing that you see is a muscle. So epimysium क्या होता है? It's a connective tissue of every single muscle. Alright, so we have the epimysium. This entire layer is the epimysium. Alright, perfect. Epimysium के बाद हमारे पास आता है fascicle. So this entire bundle, or let's say this bundle or this bundle, these are what? These are fascicles. Alright, so the entire muscle is divided into discrete bundles. It sort of has these bundles. If any of you has ever cooked with meat, with red meat specifically, you guys might have seen bundles like these. Alright, so हम लोगों ने fascicle की बात कर ली. अच्छा, perimysium क्या होता था? Perimysium is going to be surrounding the entire fascicle. So simple. Alright, and then muscle fiber आ गया. Muscle fiber को क्या चीज़ surround कर रही है? Endomysium surround कर रहा है. ठीक है, they love to give you questions like these. ठीक है, वो इसके अंदर इस चीज़ को blur कर देंगे and they'll ask you कि अच्छा ये कौन सी layer होती है. तो this is overall not very difficult, but something that you should definitely keep in mind. Alright guys, let's move on to memorization. Memorization कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ठीक है, लेकिन again your MDCAT just loves to give you questions like these के अच्छा stapedius क्या है. ठीक है, this is the smallest, sorry, let's go back to our size. Alright, this is the smallest muscle in the body. Alright, and this is specifically in your ear, and it's associated with your auditory system. Alright, so smallest muscle, stapes, I think you guys will probably figure it out. It's the smallest bone. Alright, what is the masseter? So this is basically the strongest muscle based on weight. Alright, it's a jaw muscle, one of the jaw muscles. Alright, strongest muscle, at least MDCAT के मुताबिक, strongest muscle based on weight. Okay, alright, and mandible क्या होती है? Mandible is your jawbone. Okay, probably already know, but एक छोटी सी चीज़ जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा MDCAT के questions में देखी हुई है, वो ये है कि they want you to know that the mandible is the only bone in your skull, in your head and neck. ठीक है, only bone in your skull is better वो, only bone in your skull which is movable. Alright, इसके अलावा कोई और bone हम नहीं हिला सकते. They're all fixed. Okay,
they're all fixed. All right, order of organization. Again, nothing difficult, nothing new, but I just want to cover all bases if you're doing this. All right, so guys, skeletal muscle जो होता है हमारे पास, हमारे skeletal muscle है, let's say we're talking about our bicep, ठीक है. अच्छा, skeletal muscle, सबसे पहले skeletal muscle will be divided into these muscle bundles. Alright, and muscle bundles क्या होते हैं? Muscle bundles होते हैं आपके fascicles, ठीक है. Okay, and after that you're going to be having what is called muscle fibers. Okay, so now we have our muscle fibers, ठीक है. Okay, इसके बाद क्या होता है हमारे पास? इसके बाद हमारे पास अपने myofibrils आते हैं, and then myofibrils के बाद हमारे पास आते हैं अपने, yeah, I think I should not get that fancy, I should just continue it like this. Okay, then I'm going to be having my okay, so myofibrils, then I have my sarcomere. Okay, sarcomere के बारे में आप लोगों को पता होगा most likely, but this is what? This is the smallest contractile unit. Okay, so the smallest contractile unit. Okay, and after that we have our myofilaments. Okay, फिर हमारे पास आते हैं अपने myofilaments, जिसके अंदर हमारे पास actin होता है, myosin होता है, all of these different things, we don't really need to know them. So guys, this is our entire organization, ठीक है. इसके भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सवाल देखे हैं, so please keep this thing in your mind as well. Now let's move on. Alright guys, so I sort of want to talk about the bones in more detail. Okay, bones in detail. थोड़ा सा ना हम उनकी आई वुड से हिस्टोलॉजिकली उनको देखते हैं, थोड़ा सा उनको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अच्छा, सो सबसे पहले तो हमारे पास बोन्स में ना वी हैव टू मेन रीजन्स. ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग बोन्स, बट दिस इज द वन दैट इज फॉलोड बाय आवर बुक्स, तो लेट्स जस्ट स्टिक विद दिस. ओके, सो वी हैव टू मेन रीजन्स, ठीक है. जो हमारे पास पहला रीजन है हम उसको कहते हैं पेरीऑस्टियम, ठीक है. जो पेरीऑस्टियम, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल बोन्स. ओके, ऑलमोस्ट ऑल बोन्स. कुछ बोन्स ऑब्वियसली हम आगे जाके पढ़ेंगे बिकॉज देयर इज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, सम बोन्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट. ऑलराइट, सो गाइस, पेरीऑस्टियम क्या होती है? पेरीऑस्टियम इज द आउटर रीजन. Okay, and I have a beautiful drawing of a bone, so I'll show it to you guys as well. लेकिन ये क्या होता है? This is the outer region, and then we have the endosteum, ठीक है. endosteum, endo से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये अंदर की तरफ होता है, inside होता है. Alright, so this is what? This is going to be our inner region. Okay, alright. So guys, इसके बाद हमारा जो endosteum होता है, this is further divided into 2 sections. Okay, let's take it a bit here. Periosteum की और कोई types नहीं होती, लेकिन endosteum की 2 types होती हैं. Okay, there's a peripheral type. Let's use a different color. Okay, so we have a peripheral type and then we have an inner type. जैसे समझ लो inner region and peripheral region. That's a better way actually. Okay, so guys, peripheral जो होता है इसको हम कहते हैं कि जी this is our compact bone. Okay, this part of the bone is compact and this part of the bone does not have blood supply in adults. Okay, does not have, I forgot the have, but does not have blood supply in adults at least. Okay, अच्छा, जो हमारा inner section होता है इसको हम कहते हैं कि जी this is our spongy bone. Okay, इस part में it's sort of like a sponge if you try and view it under a microscope. Okay, and इस part के अंदर हमारे पास we do have blood supply. Okay, and this is very important. This is the place where you get, आपको अगर कोई bone infections वगैरह हो जाती हैं तो इधर जाके, because यहाँ पे blood vessels होगा, keep that thing in mind, because this place does not have any blood supply. We cannot have bone infections, we cannot have infections as a result of bacteremia in the compact region. ठीक है, primary infections नहीं हो सकती. और जो inner region है, because it is spongy, because it has all of these vascular structures, sinusoids होते हैं, काफ़ी different चीज़ें होती हैं. यहाँ पे हमारे पास तो अगर आपसे कभी भी question पूछे कि there's bacteria in the blood, is it more likely to go and lodge in the spongy region or the peripheral region? The answer is going to be the spongy region. But that's, चलो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया. अच्छा गाइस, वी आर स्टिल नॉट डन अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, अब हमारे पास होते हैं इनर बोन के 2 पार्ट्स. ठीक है, द इनर बोन हैज़ 2 पार्ट्स. ओके, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? लेट्स जस्ट क्विकली गेट डन विद देम. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो. देयर इज अ येलो बोन मैरो एंड देन देयर इज गोइंग टू बी रेड बोन मैरो. ओके, तो ये हमारे पास 2 किस्म का बोन मैरो आ जाता है. ठीक है, अच्छा, ये जो येलो बोन मैरो होता है, दिस इज इन द डायफीसिस एंड द रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द एपीफीसिस.
या एपिफाइसिस भी कह सकते हैं आप। Guys, that is all that we have, ठीक है, that is all that we have कि बेसिकली डायफीसिस के जो रीजन में होगा, तो अगर वो आपको यहाँ से पिक्चर निकाल के जूमिंग करके दिखाएं, इट विल हैव येलो बोन मैरो। अगर यहाँ से दिखाएं एपिफिसिस से, दे विल हैव रेड बोन मैरो। मेटाफिसिस इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। ऑलराइट, सो गाइस दिस इज व्हाट वी हैव। दिस इज अगेन, ये मैंने बोन को पकड़ के इसको डिवाइड किया। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। सो द आउटर मोस्ट रीजन, ऑलराइट, द आउटर मोस्ट रीजन इज गोइंग टू बी द पेरिओस्टियम। ऑलराइट, एंडोस्टियम इज गोइंग टू बी द इनर रीजन। इनर रीजन में भी एक रीजन होगा तो थोड़ा सा पेरिफेरी पे होगा, बट अगेन दिस इज स्टिल गोइंग टू बी इनसाइड द पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम इज स्टिल गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सटर्नल, द मोस्ट आउटर रीजन। उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल रीजन या कॉम्पैक्ट बोन ऑफ द एंडोस्टियम आएगा, एंड देन उसके अंदर हमारे पास इनर आएगा। इनर के अंदर येलो बोन मैरो यहाँ पे मौजूद होगा, और जो रेड बोन मैरो होगा वो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। This is not difficult at all, and that concludes our video. Hope to see you guys in the next video. And again, बहुत आसान टॉपिक है. The point of making these videos is you guys just watch this video and ये सारा आपके दिमाग में फीड हो जाए, और आपको फिर इस चैप्टर पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े. आप मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनको निकालते जाएं, ठीक है. So guys, that is it. I hope you guys enjoyed, and please like and subscribe, and that is it. Allah Hafiz.